से निकलने के बाद दिस इज़ द एरिया दैट इज़ राइट बिहाइंड आवर होटल एंड अभी हमें गूगल मैप्स बता रहा है 5.15 मिनट्स एंड हम लोग पहुँचेंगे 6 आवर्स बिकॉज ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी है, टायर्ड होता है, सो वी टेक ब्रेक्स, देन देयर इज़ ऑल्सो वॉशरूम ब्रेक्स एंड देन ड्रिंक्स ब्रेक्स, पानी वाला. एंड दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल व्यू, कोकोनट ट्रीज एंड एवरीथिंग. मुझे पता नहीं क्या है कि कोकोनट ट्रीज को देख के एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है, लाइक हाउ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग एंड calming they are. So that's what one thing I absolutely love in Goa. Oh, by the way, यहाँ पे ही लेफ्ट में हिमालयन कैफे where we came to have a lunch. Now we are heading towards highway. मुझे लगा था हाईवे इतनी देर में आ जाना चाहिए बट वी आर स्टिल अवे फ्रॉम द हाईवे एंड ये थोड़ा सा नॉर्मल सा ट्रैफिक गोवा वाला मिल रहा है. मतलब इट्स नॉट ट्रैफिक बट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल ऑन रोड, तो ऑब्वियसली उसके वजह से स्पीड भी थोड़ी स्लो है. Yo guys, so as I said earlier that I am heading to Murudeshwar and अभी हम लोग सिर्फ मडगांव पहुँचे and oh my god the weather is so hot. मतलब I think कि मैंने गलत सीज़न चूज़ कर लिया because रात को it was literally so cold and अभी it is so hot. The weather is more hot than I am. Can you imagine that? And there's beautiful mama and the Madgaon place that we are taking a halt. अच्छा खासा हाइड्रेट होने के बाद we are moving towards Murudeshwar. It is just few hours more. And ये छोटी छोटी गलियाँ गोवा की, ओहो ये अभी गोवा नहीं है, I don't know which area it is, but whatever area it is a very narrow road and trust me यहाँ से निकलना ही आई एम प्रेइंग कि जल्दी जल्दी निकले बिकॉज बहुत सारे ट्रक्स एंड ओवरटेक करने का मौका नहीं मिलता है. Now we have taken another break. We are just refilling our bottles because हम लोग का पानी ख़त्म हो गया था and यहाँ पे बहुत गर्मी है. So we are all done and moving forward to our destination. And finally बहुत narrow road के बाद अच्छा खासा लंबा रोड आ रहा है. लंबा नहीं but it is a 2-lane road and literally there is no one right now. Like क्या व्यू है, like smooth road एकदम मक्खन जैसा and I'm cruising on 80 and I have no fear कि कोई भी overtake करेगा पागल जैसे. And ये road ओए होए I swear it has my heart. And look वहाँ पे पहाड़ भी है, like I've seen beach and mountain, smooth road, off-roading सब एक साथ ये राइड में हो गया. Like it is literally a cocktail of memory right now. And how beautiful this is, oh my god. And we reached Murudeshwar, woohoo! And right behind this deep stump is our favorite, मतलब not favorite but Lord Shiva. Hi Bhagwan, I'll just park my bike and come to meet you फटाफट से. So we reached Murudeshwar finally. बहुत गर्मी था but fingers crossed we reached safely, soundly and happily. Now it's time to go up and take darshan. So let's go. So we took our room to ourselves and this is the room tour for you guys. एकदम quick सा. So we have a छोटू सा TV, some windows for ventilation, bed है, then we have washroom. By the way यहाँ पे chairs है जिसपे हम लोग ने हमारा सामान का बसेरा करके रखा है. And here's the washroom. By the way the washroom is huge. So yeah, that's the view for the washroom. एंड काफ़ी स्पेशियस है एंड दे ऑल्सो प्रोवाइडेड अस विद टॉवल. एंड उसके नेक्स्ट डोर वी हैव अ बालकनी
and this balcony gives such a beautiful sea view. Oh my god, यही अगर मुंबई में होता ना तो 10,000 के नीचे नहीं मिलने वाला था रूम, and here it was like pretty reasonable. It was 1,200 and we enjoyed it. एंड ये है हमारे रूम के बाहर का व्यू. लाइक इट इज़ जस्ट 2 minutes अवे फ्रॉम आवर रूम. सो वी रीच्ड मुरुदेश्वर एंड ओ माय गॉड इट इज़ सो गॉर्जियस. मतलब द व्यू, द वाइब्स, एवरीथिंग इज top notch. By the way, sorry, I am very tired, and so is Boa. She's asleep already. So yeah, we still have to take darshan and see the morning view. So we'll do that, and उसके बाद we'll head to Bombay. So far so good. Hi guys, good morning. So it is day 2 in Murudeshwar and हम लोग actually घर के लिए निकल रहे थे, but then we decided that we should go up over here and check out the view. मैंने बहुत सुना है कि the view is gorgeous and यहाँ तक आए थे तो इतना तो बनता है. So we are going to do that and then we'll leave for home. Also यहाँ पे इतनी शांति है ना, wow. So we are leaving from Murudeshwar to Mumbai. All the best to us and oh my god, बहुत खुशी हो रही है and यहाँ पे हम लोग का ट्रैवल बहुत अच्छा हुआ है. Now let's go home and catch you on road.